My dear students, we are studying fundamental right, which is freedom of movement and freedom of assembly. Now we are going to discuss second part of the fundamental right, freedom of movement and freedom of assembly. Second part is freedom of assembly. फ्रीडम ऑफ असेंबली क्या है, इसको देखते हैं. कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ असेंबली इंक्लूड्स टेकिंग पार्ट इन पब्लिक मीटिंग्स. फ्रीडम ऑफ असेंबली इंक्लूड्स टेकिंग पार्ट इन प्रोसेशंस एंड डेमोन्स्ट्रेशंस. Dear students, under English law, all the freedoms including the freedom of assembly are in fact liberties and not rights. Freedom of assembly means that there is no law forbidding people to assemble. फ्रीडम ऑफ असेंबली से मुराद ये है कि कोई लॉ अगर लोग पीसफुली असेंबल होना चाहते हैं तो उनको ये काम करने से नहीं रोक सकता. माय डियर स्टूडेंट्स, इफ अ नंबर ऑफ पीपल चूज टू गो टू द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, दिस इज नॉट एट ऑल अनलॉफुल, प्रोवाइडेड that they keep within the limits of the law individually and collectively. यहां पर यह राइट दिया गया है कि फ्रीडम ऑफ असेंबली जो है, लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर कहीं भी जा सकते हैं और इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन यहां पर साथ ही प्रोविजो अटैच कर दिया गया. याद रखने की बात यह है कि यहां पे लफ्ज जो प्रोवाइडेड है ये प्रोविजो के मुतल्लिक बताता है, और प्रोविजो जो होता है वो जो जनरल बात ऊपर कही होती है उसके साथ एडिशन, कंडीशन या एक्सेप्शन लगा देता है. तो यहां पर जो प्रोविजो अटैच्ड है वो ये है कि वो लोग जो असेंबल होना चाहते हैं, जो फ्रीडम ऑफ असेंबली को के राइट को एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वो ये सब कुछ जो है एज पर लॉ रहते हुए करेंगे. Dear students, an assembly convened for the purpose of effecting a breach of the peace is unlawful at common law. अगर कोई फ्रीडम ऑफ असेंबली जो है वो हो रहा है और उसका जो पर्पस है दैट इज टू ब्रीच पीस, ये अनलॉफुल कंसिडर की जाती है. एंड देयर आर वेरियस स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस नोटेबली अंडर पब्लिक ऑर्डर्स, Acts, Highways Acts, the Police Act 1964 and local bylaws. My dear students, Britain is the party to the European Convention, which provides that everyone has the right to freedom of peaceful assembly. Now let's discuss what is the situation of freedom of assembly in Pakistan under the Constitution of Pakistan 1973. In this regard, we are going to discuss Article 16. Article 16 of the Constitution of Pakistan 1973 provides that every citizen shall have the right to assemble peacefully, without arms, subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of public order.